Morning students, let's start your new chapter from English first, and that is your third lecture, and the story is cow. This is very interesting story. Okay, let's see how this story is very interesting for you. Okay, let's discuss with main characters of the story, and through the characters we will go through इस स्टोरी. ओके, मेन कैरेक्टर्स जो मुख्य पात्र हैं हम उनकी चर्चा करते हुए पूरी कहानी का अध्ययन करेंगे. ओके, फर्स्ट मेन इज मिल्कमैन. मिल्कमैन, दूध वाला. ओके, he is a milkman and he has a cow. One day his cow gets upset, gets angry and sitting in the middle of the road. और एक दिन क्या हुआ, उसकी गाय नाराज हो गई, गुस्सा हो गई और बीच सड़क पर बैठ गई. At that time, what he is saying, he tried to remove first, but after that, the milkman begged mother cow, please get up. Children are waiting for their milk to help them grow strong. Okay, and the sweet sellers are waiting for milk to make delicious sweet meats, and farmers are waiting for their buttermilk. अब क्या कहा कि जो बच्चे हैं वे दूध का इंतजार कर रहे हैं कि जिससे वह मजबूती से अपना विकास कर सके, और जो मिठाई वाला है वह मिठाइयाँ, स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए इंतजार कर रहा है, और जो फार्मर्स है वह लस्सी का इंतजार कर रहे हैं. Now along with came policeman. Okay, policeman with buttons and buckles, with buttons and buckles, buckles gleaming in the sun. Okay, वह बटन लगाता हुआ आया और उसके जो बकल था वह चमक रहा था. Along with both have tugged and pulled the cow, but at that day the cow moves nowhere. After that, grocer came with bags of potatoes and peas. अब एक सब्जी बेचने वाला आया जिसके पास आलू और मटर के थैले थे. Both three have started removing cow. Okay, they tugged and pulled the cow, but the result was same. Now who came? Wrestler came with muscles gleaming, muscles, muscles gleaming in the sun. Muscles gleaming in the sun means एक पहलवान आया जिसकी मांसपेशियां क्या कर रहे थे, ये सूर्य की रोशनी में तेज चमक मार रही थी. He started laughing, उसने हंसना शुरू किया. What a task it is, कि यह कौन सा काम है गाय को हटाना. Now milkman, policeman, grocer and the wrestler tugged and pulled the cow, but the result was same. Cow doesn't move. अब गाय बिल्कुल भी हिली नहीं. अब उसके बाद कौन आते हैं? इंजीनियर आते हैं. इंजीनियर with his fancy degree. अब मैं अपनी डिग्री हाथ में लिए हुए घूम रहे हैं
वह भी हंसते हैं। व्हाट दीज फेलोज आर डूइंग, कि ये जो कर्मी हैं, यह जो लोग हैं, वह आपस में क्या कर रहे हैं। अलॉन्ग विद द मिल्कमैन, policeman, grocer, wrestler and engineer all together tugged and pulled the cow, but again the result is same, और अंत में जो परिणाम था वह एक जैसा हुआ कि गाय अपनी जगह से नहीं हिली। Now आइसक्रीम मैन joined later, ओके। आइसक्रीम मैन ने क्या कर लिया, जिंगलिंग हिज कार्ट। जिंगलिंग हिज कार्ट मीन्स ringing bell in his cart, he is coming, and then he also asked what you people are doing, कि आप लोग क्या कर रहे हैं। And now along with milkman, policeman, grocer, wrestler, engineer and ice cream man tugged and pulled the cow, but the result was same। अब क्या हुआ, इन सभी लोगों ने मिलकर जोर लगाया, गाय को हटाने की कोशिश की, परंतु गाय अपनी जगह से हटी नहीं। ओके, नाउ हु केम, कॉबलर के, कॉबलर with his leather and all क्या है बच्चे, ये आपका एक टूल है which is used to hold, okay, in a leather। वह अपने चमड़े और एक औजार के साथ आया, और अब उसने भी क्या किया, इन सभी लोगों के साथ मिलकर गाय को हटाने की कोशिश की। मीन्स मिल्कमैन, पुलिसमैन, ग्रोसर, रेस्लर, इंजीनियर, आइसक्रीम मैन एंड कॉबलर tugged and pulled the cow, but again the result was same। सभी ने मिलकर जोर लगाया, परंतु परिणाम वही हुआ कि गाय अपनी जगह से नहीं हटी। Now the painter, okay, his clothes splattered with orange, splattered with orange, pink and blue। जो पेंटर था उसके कपड़ों पर छींटे पड़े थे, किसके, ऑरेंज, पिंक एंड ब्लू, जो देखने में ग्रे कलर का लग रहा था। ओके, now all these people came together, tugged and pulled the cow, but the result was same। अब इन्होंने क्या किया, सभी लोगों ने मिलकर जोर लगाया, गाय को हटाने की कोशिश की, परंतु रिजल्ट क्या था, सेम था, एक जैसा था उसका जो परिणाम था। अब बाद में क्या हुआ, पीनट वेंडर, मूंगफली बेचने वाले ने ज्वाइन किया, और अंत में क्या आया, लिटिल बॉय, he was passing from that side, वह उस जगह से गुजर रहा था। As he is very little, very naughty, smart, an idea came into his mind that we were taught in class 2nd that animals eat grass। He ran and came a bucket of grass, वह दौड़ कर गया और तुरंत घास की टोकरी लेकर आया और गाय के सामने ले जाके वह खड़ा हो गया। गाय ने जब घास को चबाना शुरू किया, when the cow started eating grass, slowly he moves side from the road, धीरे धीरे वह सड़क से दूर होता चला गया, और in this way the cow moves from the road, और इस प्रकार से गाय सड़क से हटी। All these fellows, milkman, policeman, grocer, wrestler, engineer, ice cream man, cobbler, painter, these people have started laughing for the smartness of the boy। वह लड़के की चतुराई पर हंसने लगे। This is your whole story and you have to do your exercise yourself, guys। Okay, that's guys, thank you।